हेलो मैथमेटिकल रीजनिंग रो पार्ट 6 एच आम पढ़मा टोटोलॉजी कणे देन कॉन्ट्राडिक्शन माने कणे देन implication double implication और quantifier मान कर ओके सो टोटोलॉजी माने कण जस्ट गोटे सिंपल एग्जांपल दे दउछे p negation of p disjunction negation of p right truth table काना बा true false false true p true true right और देखो इनु काने देखला कि मोर p रो ट्रूथ वैल्यू जान भी तो जेन कंपोजिट स्टेटमेंट अछि इता ट्रूथ वैल्यू सब बेले ट्रू आसुजे तो जेते बेले गुटे कंपोजिट स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू सब बेले पॉजिटिव आसबा सेटा के क्वेश्चन टोटोलॉजी ओके ता डेफिनेशन इटे कि इफ ए कंपोजिट स्टेटमेंट p is always true माने कंपोजिट स्टेटमेंट p टा प्राइम न हैला ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल possible assignment of truth values to its prime component then it is called tautology ओके तो जदि गोटे कंपोजिट स्टेटमेंट p टा गोटे कंपोजिट स्टेटमेंट है इट्स ऑलवेज ट्रू सब बेले जदि सत हेबा फॉर ऑल पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू टू इट्स प्राइम कंपोनेंट यदि प्राइम कंपोनेंट रो कैंसी भी कॉम्बिनेशन थी माने तुम्हें सब तार तो बेसिकली आम क्या कह ट्रूथ वैल्यू दी प्राइम कंपोनेंट एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि नेसु राइट तो तार ट्रूथ वैल्यू रो फाइनल कॉलमटा जदि सब बेले सत होता टी होता बेले से कहते टाउटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन टा आम जस्ट ऑपोजिट नहीं पारमा कि ए proposition like prime proposition composite proposition it false for all possible assignment of truth value to its prime component okay तो ए कंपोजिट प्रोपोजिशन इटा जस्ट टोटोलॉजी ऑपोजिट है कि फॉल्स है फॉर ऑल पॉसिबल असाइनमेंट टू इट्स प्राइम कंपोनेंट तो एग्जांपल दे दो p negation of p okay p
negation of p एक्चुअली इटा जीरो ऑलवेज हमें प्रूव करके देखो जे कि सपोज x एट द ट्रूथ वैल्यू x into 1 minus x yeah so x into x always 0 so it is 0 ही हवा मैंने mathematically मैं prove कर पाया but that will be confusing I guess so true false false true दुईटा ट्रू हबार के पड़वा तो फॉल्स फॉल्स ओके फॉल सब बेले फॉल्स ही हो तार लास्ट कॉलमटा तो यहाँ गोटे कॉन्ट्राडिक्शन ओके ठीक अच्छे आम टोटोलॉजी विषय पढ़ला आउ विषय पढ़ला जस्ट गोटे आम ट्रूथ टेबल इन गोटे मुझे देखो जेनटा कि ड्र कर तो यहाँ हूँ से ट्रूथ टेबल पी क्यू प्राइम कंपोनेंट नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू अपने नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशन टू नेगेशन ऑफ पी जेनटा कि ए कॉलम द्वारा चिन्ह करा जाउछि देन negation of q condition to negation of p condition to p तो ए कंडीशन टू बी टा सी है और बी कंडीशन टू ए टा डी है हेलो तो इनो में ट्रूथ टेबल काटनी तो आम ये दुई कॉलम के देखूँ बहुत जिनिस इनो टेबल टू बहुत किसी सीखवार के मिलवा तो जिते बेले ट्रू 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 आम ये दुई कॉलम के देखू ए बी इथे समान इथे भी समान इथे भी समान इथे भी समान तो ए बी रो ट्रूथ टेबल सब बेले समान आसूचे बेले ए बी काण गोटे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ओके आम सी स्टेटमेंट के देखो जेनटा कि दुई लोकर कंडीशनल है सेटा गोटे टोटोलॉजी है डी स्टेटमेंट भी गोटे टोटोलॉजी है गोटे स्टेटमेंट जेनटा कि सी डी रो एंड है सी डी रो एंड है सेटा भी गोटे गोटे टोटोलॉजी है तो जस्ट वन्स किसी सेकेंड लगी वीडियो के पॉज करूँ टोटोलॉजी माने ये ट्रूथ टेबल के टिके भल से देखो है तो ये ट्रूथ टेबल के तो ठीक अच्छे नेक्स्ट ये ट्रूथ टेबल आम कण शिखला ट्रूथ टेबल कि दुईटा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट रो कंडीशनलटा सब बेले गोटे टोटोलॉजी फॉर्म करवा और दुईटा टोटोलॉजी रो एंडटा सब बेले गोटे टोटोलॉजी फॉर्म करवा है बुझेगा तो आम इन आगो टेबल शिखला कि कंडीशनल ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का नेबा is always a tautology right okay both conjunction and disjunction of two statement and or दुईटा टोटोलॉजी स्टेटमेंट which are total which are will always be टोटोलॉजी ओके तो कंजक्शन और डिसजंक्शन दुईटा टोटोलॉजी स्टेटमेंट रो सब बेले टोटोलॉजी ही फॉर्म है बेले ट्रूथ वैल्यू सब ट्रू है आम एंड ऑपरेशन रे शामिल करमा कि और ऑपरेशन रे भी शामिल करमा है तो ठीक अच्छे और फिर आम इनके आसू ट्रूथ टेबल के तो एबे आम पढ़मा इम्प्लिकेशन
एटा सिंपल है या रिलेटेड टू जदि इफ p condition q is a tautology then आम लिखि पार्मा कि p implies q और p implies q इटा हो जे इटा क्वेश्चन इम्प्लिकेशंस है जदि p और q दुईटा कंपोजिट स्टेटमेंट है तेरे कि टोटोलॉजी पारे प्राइम कंपोनेंट मान से माने इंडिपेंडेंट तो ये दुई कंपोजिट स्टेटमेंट जदि जदि ताकर कंडीशनल टोटोलॉजी है बेले से माने p implies q बोले आम लिखि पार्मा जेनता कि इनु ए कंडीशन इटा ए कंडीशन टू बी रो टू टेबल है ट्रू होची बेले तार माने इटा कि ए इम्प्लाइज बी इटा के लिखि पार्मा तार अर्थ इटा कि ए इम्प्लाइज बी नु लिखि पार्मा जेनु कि ए इटा और बी इटा हला तो गोटे इन ट्रिक अच्छे तो मुझे क्या कहली कि p कंडीशन टू q जिते बेले सत है सबू बेले तबे आम लिखि पार्मा कि p इम्प्लाइज q ठीक अच्छे तो आम जब p कंडीशन q रो सिंपल तार ट्रुथ टेबल के देखमा बेले इटा आमको जदि मुझे जदि लिख पार कि p इम्प्लाइज q तार माने काने सैटिस्फाई कर कथा कि ई जेन कलमटा सब बेले सत होतार कथा राइट ई कलमटा सब बेले सत होतार कथा ठीक अच्छे यहाँ सब इनु भी सत अच्छे इनु भी सत अच्छे इनु भी सत अच्छे फल्स के अच्छे इनु फल्स तो यहाँ सत केते बेले हवा जदि इनु ई जगहटा जदि ट्रू हो बेले यहाँ ऑटोमेटिक ट्रू हो बुझला तो जेहेतु यहाँ फल्स अच्छे बेले यहाँ फल्स हो तो तार अर्थ काण कहे कि ए इम्प्लाइज बी कहसी तो जदि p इम्प्लाइज q हो गला देन माने देखो जदि p इम्प्लाइज q हो गला बेले p इम्प्लाइज q हो गला बेले सब बेले सत है बेले यहाँ जब ट्रू है बेले यहाँ ट्रू है बाध्य है जदि ना है बेले p इम्प्लाइज q ना हो पारे तो p इम्प्लाइज q जदि आम लिखमा देन इट मीन्स दैट p लाइक मैं मैथमेटिकल टर्म लिखी फ्रॉम ट्रूथ जदि p टा सत हो फ्रॉम ट्रूथ ऑफ p th ट्रूथ ऑफ q फॉलो आसबा और सिंपलर वर्ड रे लिखी बेले if p is true then q is always true है तो तार अर्थ ये कि p इम्प्लाइज q तापरे आसला बाय कंडीशनल बाय डबल इम्प्लिकेशन डबल इम्प्लिकेशन अर्थ कण कि जदि इफ p बाय कंडीशनल टू q इज ए tautology then we can write p implies and implied by q तार अर्थ p implies q and p implies and implied by q है p by conditional q गोटे कथा सोर रखी कि सिंगल इम्प्लिकेशन कि डबल इम्प्लिकेशन आर नॉट कनेक्टिव कि और से माने कैन सी दे डोंट फॉर्म एनी स्टेटमेंट से माने जस्ट कंडीशन जेन माने बतासन कि नहीं दुईटा टोटोलॉजी रे अछन ओन फॉर्म एनी स्टेटमेंट ओके तो ट्रूथ टेबल नहीं फेर के आसू ये बहुत इंपोर्टेंट ट्रूथ टेबल टे इंटरेस्टिंग है तो इनो देखो कि इटा काने कहउची इटा कहउची कि ए बाय कंडीशनल
टू बी राइट लास्ट कॉलमटा तो इटा टोटोलॉजी फॉर्म करुचे तो इन आम लिखिपार्मा कि ए इज ए डबल implication of B or A implies and implied by B. A हला माने B हेबा और B हला माने A हेबा. Okay. ठीक अच्छे. Then our next topic quantifiers. तो इटा छोट टॉपिक टे हेते किसी डिफिकल्टी ना नो. Quantifiers माने चिन्हान कोई पारो तीनटा माने there exist. ई चिन्ह कैसे कि there exist. ओके तो मैं ये चिन्ह यूज करके लिखी पाऊँ कि there exist x such that x is a even prime number. एंता गोटे x अच्छे जेनटा कि जुग्म में इवेन है और मौलिक संख्या भी है तो सेटा केते दुई खाली दुईटा एंता गोटे खाली दुई ही गोटे एक्जिस्ट करसी बोले ई चिन्ह ती कहला कि देयर एक्जिस्ट सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर तो मुई इटा लिखली ई चिन्ह दी को लिखली बोले देयर एक्जिस्ट यूनिकली एक्स खाली गोटे ही एक्स अच्छे सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर. तो हला तापरे आउ गोटे स्टेटमेंट आउ गोटे लिखनी कि आउ इटा कने कहसी कि फॉर ऑल. ओके तो तार एग्जांपल इटे कि फॉर ऑल एक्स इटा माने बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर जेन भी एक्स रियल नंबर के बिलोंग करसन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो सबू एक्स लगी इटा सत बुझेला एक्स स्क्वायर इटा मुझे केते लिखमी तो इटा सत तो इटा कहसी कि देयर एक्जिस्ट और इटा कहसी कि फॉर ऑल एक्स. तो इतार मुझे नेगेशन नहीं हवा कि स्टेटमेंट तो मुझे नेगेशन टे नेली कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इतार नेगेशन कान हवा माने इम्प्लाइज इतार नेगेशन कान हवा देयर एक्जिस्ट एक्स जेनटा कि आर के बिलोंग करसी ऑल रो नेगेशन इनके पड़ेल जेन कि एक्स स्क्वायर टा छोटे 0 बुझेला. तो एंता हिसाब क्वांटिफायर है इटा आम हायर स्टडी यूज है बहुत अधिका तो एच लगी एते. धन्यवाद वीडियो देखवार लगी.